I wanted this answers count and the categories count should be at least be equal to 1, at least should be greater than 0. So किसी ने try किया? First thing, Ashish Gaikwad, very good. मैंने तेरा SQL का sheet देखा. I'm very happy to see that. I hope कि सब लोग वो करे, एक बार practice करे guys. पूरा दिन सिर्फ practice करना है. अगर कुछ काम है आपके पास तो सिर्फ practice करना है, right? Anyone tried? Ashish and Pawan and Nikhil, ये answers count should be greater than 0. ये try किया कोणी? नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं किया. Okay. Okay, so let's look at this. See what you can do is, anyone else who has tried? Okay, so I'm going to go and create here a folder. Let me go and create a folder here. This is question. This is this, right? How about going and creating, how do you say, a service? Service matlab wo sab jagah use hoega, hai na? It will be used everywhere. So I'm going to go and add. Look at this the way this is the data access layer. This is the model. Different class projects. इसमें सिर्फ controllers and views है. Controllers models. इसमें का model अभी delete कर सकते हैं हम लोग. We don't need the models out here, right? And we were testing using Postman. मतलब सोचो कि अगर एक बंदा is working on web API, उसको UI बनाने का जरूरत ही नहीं है. वो अपना web API अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं. Okay? And then later give it to the UI developers. Preeti does not have to worry about web API. Preeti, what you can do is तू फक्त HTTP कॉल कर, कलेक्शन मध्ये काय करायचं त्याचा लॉजिकली, त्याच्यावरती काही करण्याचं गरज नाही. There is something called as mocking, right, which I will come to. इससे क्या होता है कि दोनों टीम अलग अलग काम कर सकते हैं. They don't have to talk to each other a lot. एक टाइम इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, बट अगर मेरे पास 10 लोग का टीम है तो मैं कैसे एक टीम को दूसरी टीम से इंडिपेंडेंट बनाऊं. That's how these tools like Postman and general thought process does it, right? So अभी यहाँ पे I want to go and test. So what I'll do, I'll create a globe. Now here, you can give this class project as utilities, you can give it as services. Yeah, jo bhi naam dena, I will give it as services. So I'll create a class library. Yeah, please understand. I'll create a class library. Let me go a proper way. Class library. You have to use .NET Core, right? And I will say next. And I will say that this is a service. Services. Services means all my general code. Just Angular maybe services hai. All general code I will put it out here, right? Remember the जिसमें UI है, wherever you have a UI, आपको ऐसा globe का sign दिखता है, जिसमें नहीं है उसमें you don't see it. Okay. So here I will go. एक minute, guys. I need to. Let's remember I'm using. Will be late by 10 minutes. So मुझे ना ये चीज को. So now what I'll do is यहाँ पे I will go and I will say I want to create. Remember for data annotations. So this is C#. You can see class libraries. This is web application of Globe dikh raha hai, right? So this is having HTML also. Okay, so here I'll say I want to create here a utility service here called check answers ka count at least utna hona chahiye, right? So here you can see to do that you can create a custom validation attribute. So I'll inherit from validation attribute, right? इसके लिए we have to refer that data annotations, no problem. Data annotations refer करो, right? Now इसको थोड़ा सा let's rename this. We'll say validations. Validations. Custom मतलब अपने खुद के validation से ही है. If you see this validation attribute again, what it gives you nice things out here. For example, it gives you one is this override is valid. So I'm going to go and say here override is valid, right? Now I want to go and check. ये जो भी I get an object. Interesting. Does it have a generic name? I want to check यहाँ पे. First, I will add the dependency of the model. It's getting complicated. And I will say that here I'm expecting a list of. List of. What is that? Answers. अभी ना ये check answers नहीं होना चाहिए, but it's okay. This is a generic. Okay.
Okay, is valid. Okay, it has to return all path. Oh, he didn't find anything to override. उसको ऑब्जेक्ट ही चाहिए मतलब ठीक है I'll say object answers ऑब्जेक्ट ही चाहिए ऑब्जेक्ट what is object we'll see तो अभी यहाँ पे मुझे answers मिला right I will say okay if so I'll say list of check answers ये check answer होना चाहिए था कैसे check answers हो गया अभी क्या करें यार answers कोलाइड मत करो उसको use the word इसको underscore use करो so I will typecast ऊपर से तो object आ रहा है ना so underscore answers I will typecast this to a list of check answers so list and now I'll say if answers.count is greater than 0 then return true or else किया what I've done is I have created my own attribute मैंने खुद का attribute तैयार किया और मैंने बोला भाई जैसे ही कुछ आंसर चेक नहीं हुआ है तो यार अब now what I can do is I can refer this मैं इसको रेफर करूंगा अभी in the interview question server add project reference services and I will say here interview question controller sorry interview question sorry I will refer in the बहुत गड़बड़ होने वाला है this is so bad this is fun एक्चुअली मुझे अभी क्या करना पड़ेगा इसको मॉडल्स में रेफर करना पड़ेगा I have to refer in the models and I will face a problem services is referring the model is referring the services तो बोलेगा सर्कुलर डिपेंडेंसी भाई सर्विसेज रेफर कर रहा है मॉडल आप रेफर कर रहे हो सर्विसेज यू नो क्योंकि अभी सर्विसेज को व्हाई द सर्विसेज हैज टू रेफर कि भाई मुझे यहाँ पे देखना है कि ये लिस्ट ऑफ आंसर्स है कि नहीं राइट और अभी मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा तो बोलेगा भाई ये चेक आंसर्स है कि नहीं सैड सिचुएशन इसका आर्किटेक्चर सोचना पड़ेगा चलो फॉर नाउ आई विल डू द वेरी बैड हैक I will do like this I'll say list of object इसको टाइपकास्ट करो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को बैड है यहाँ क्योंकि अभी आंसर्स है क्या क्वेश्चंस है कुछ है ही नहीं बस वो कलेक्शन से मुझे काउंट चाहिए आई हैव जस्ट डन दैट सो नाउ व्हाट आई कैन डू यहाँ पे रिमेंबर मॉडल्स वाज रेफरिंग सर्विसेज वर रेफरिंग मॉडल्स मॉडल्स वाज रेफरिंग सर्विसेज सब गड़बड़ हो गया ठीक है एड रेफरेंसेस आई विल से नाउ रेफर सर्विसेज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा so now here in this case what I'll do now I'll go and I'll say वहाँ पे check answers so मतलब you can see now I've created my own custom attribute are you getting रोशन मैंने क्या किया are you following yes sir है ना मैंने एक अलग सा कस्टम वैलिडेशन बनाया उसमें इसका लॉजिक लिखा और उसको उस पर डेकोरेट कर दिया अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है we'll see that right now so what will happen now let us go and check ये पोस्टमैन रिमेंबर कल किया था हमने पोस्टमैन एक प्रोजेक्ट को उसका स्टार्टअप बनाना है जो भी डार्क है वहां पे दैट इज अ स्टार्टअप सो ठीक है लेट्स गो लेट्स मेक दिस पोस्टमैन की जय वेयर इज द पोस्टमैन अभी यहां से वी ऑल नो हाउ टू पोस्ट मल्टीपल आंसर्स एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट इसमें से मल्टीपल कलेक्शंस कैसे पोस्ट करना है डिड वी सी एवरीवन यस्टरडे आई थिंक किसी ने तो किया था जेसन में 2 क्वेश्चन डाला था राइट somebody did that I forgot it did anyone attempt I think कल कोई कर रहा था attempt so one thing which
was there was कि मुझे when I post from the body तो मुझे क्या करना चाहिए? वो किधर गया जेसन भाई? मेरे इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? रॉ पे क्लिक करें। Okay. Fine. So from here, I want to post a collection. है ना? तो एक काम करता हूँ, अभी तो आंसर्स वैसा भी काउंट 0 है. Let us at least let me do like this. Let us see कि वो चलता भी है कि नहीं. Okay. So what I'm going to do is I'm going to just make a post call. How about like that? I just make a submit call. Let's do that. Let us see कि वो code at least चलता है कि नहीं. Send. I want to check कि ये value fire होता भी है कि नहीं. So let's go here one by one. Oh, I can't have a null. चलो. था वो null नहीं चलेगा. Was like this, प्रीति. मैं भूल गया. Is that क्यों आ रहा है error? कैसे resolve करूँ? सर डबल कोट क्वेश्चन भी डबल कोट. Oh yes. I always feel like you may. Sorry. MVC का. See that answers का fire हुआ, which is very good. अभी answers में कुछ भी नहीं है. Answers में null है. Null को handle करना है, please. ये null reference नहीं चलेगा. Null and these are different things, huh? So या तो answers is not equal to 0. Even if answers is null, then also return false. प्लीज अच्छा कोड लिखो. ये मैंने बहुत घटिया सा कोड लिखा हुआ है. नल हो कुछ भी हो, राइट. आई वांट दैट दिस शुड बी देयर, राइट. नाउ आंसर्स में क्या था अपने पास? आंसर्स. ये अच्छा नहीं, आंसर टेक्स्ट होना चाहिए था. थोड़ा देखो अच्छा नहीं लग रहा है. क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्स्ट टीएक्सटी क्वेश्चन आंसर एंड टीएक्सटी आंसर होना चाहिए. सो जो आंसर्स का मतलब है बहुत सारे आंसर्स और है एक ही, राइट. दैट्स अ प्रॉब्लम. ये one to many है. कैसे किया है? Many to many है, right? How did you guys do it? So first thing, man, if I say send, so now you can see this is a null. So will the return false, and from here बार evaluate कर रहा है भाई क्यों? I don't know. But now in the error result, can you see, guys? Answers is needed. Question का तो हो गया, right? But उसने ये भी दे दिया अभी. Everyone can see that? Yeah. अब इसको थोड़ा सा अच्छा से नाम दो. मतलब try to give one good error message. यहाँ पे से least one answer is needed. This is a matter of practice. Please, जितना आप ज़्यादा practice करोगे उतना it would be great. मेरा भी hands on खत्म हो गया है. Management का काम लेके बहुत बैठा हूँ ना. I'm always a cobbler. तो मुझे लगता है कि मैं मच्छी अच्छे से मार सकता हूँ. मैं मच्छी का कंपनी नहीं बना सकता. I always miss to be hands on. So management work is also important. So now ये बार फायर हो रहा है. बड़ा अच्छा नहीं है. It's firing again and again. So now my error result में, can you see custom message, guys? Yeah. Yes, sir. So what I want now, I have some other meeting also. ये थोड़ा करते हैं, guys. Please ये project में please बैठो, because this is where I'll stop recording because Preeti stop करा recording. This please send this, right?